Hello and welcome to the second podcast of the Red Side. मेरे साथ है दिव्यांश. How are you feeling, bro? Anxious. I mean, that won't be an understatement because with the result that happened in the midweek, Yeah. उसके बाद से थोड़ा सा डर है कि ना मतलब उसका क्या रहेगा. And Palace is good. Like Palace hasn't had the best of the you can say results this season. Like अभी after the World Cup, but फिर वही ये बात है ना कि Sellers Park मैच है So तो context for the viewers, as of right now, जब हम लोग फिल्म कर रहे हैं, 5 गेम्स हो चुकी हैं. पांचवी गेम चल रही है अभी. मैन सिटी बोर्नमouth. लिवरपूल इज येट टू प्ले पैलेस एंड स्पर्स इज येट टू प्ले चेल्सी. ये दो गेम्स अभी तक नहीं हुई. हम इसके लिए 5 मैच हो चुकी. This is the sixth game. दिस इज 6 गेम, सॉरी. ओके, 5 गेम्स हो One चुकी game है. happened last night. ओके, हाँ, 5 गेम्स हो चुकी है. 2 गेम्स बाकी हैं जो हम लोग कल उसके लिए रिकॉर्ड करेंगे. um, Yeah, but I think we should start with the big match, the match you were waiting for, the Arsenal match. Thoughts yeah. like कैसा रहा match? And Zinchenko giving the captainship to Zinchenko class. No, that was a class move. That was a class move both by the club and by Odegaard to give the captaincy to Zinchenko to Mhm. celebrate the 1 year anniversary of the Russian invasion of Ukraine. Yeah. So, class credit to the club. But if we actually look at the match, मैंने जो एक हफ्ते पहले जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी इस चैनल पे, उसमें मैंने कहा था कि इफ वी वांट टू प्रोग्रेस, व्हाट वी नीड टू Mm-hmm. डू इज इनकेटिया की जगह पे जब तक जेसूस वापस नहीं आ जाता, वी नीड टू प्ले ट्रोसार्ड. क्योंकि Mm-hmm. ट्रोसार्ड और मार्टिनेली ये दोनों इंटरचेंज करेंगे. Can we say that yes, our videos as we watched, like बाय मिकेल आर्टेटा. one of the 98 views was of Mikel Arteta. मिकेल आर्टेटा, वन Can we ऑफ द get those statistics? we only have 14 subscribers, but one of them is the head coach of Arsenal. I like that. I just want Klopp to become one. But yeah, so Trossard played instead of Nketiah, and to be honest, that move worked. That move really worked. Mhm. क्योंकि सब कुछ लेफ्ट साइड से हो रहा Mhm. था. राइट साइड पे वी वर लॉक्ड ऑफ. Mhm. जो यूजुअल टीम्स करती है, लेस्टर ने भी वही किया. हर टीम यही प्रोसेस फॉलो करती है आर्सेनल को हराने. I मैं like that left back. I think कस्तानिया. Swedish left back ओ नो, क्रिस्टियनसन. Christensen. Yeah, क्रिस्टियनसन, या. Kasanya is like he was okay, decent. He was ओके. decent. Like उसने अच्छे interceptions निकाले. कुछ जो उसका forward run होता था ना, उसके अच्छे interceptions थे. But I think he is there for the Leicester fans only. मतलब वो ऐसा है कि nobody will take him and he या, is वो happy being लेस्टर there. पे ही खेलने वाले. हाँ. सो इफ यू लुक एट द गेम, जो टेम्पलेट है वही इस टीम ने भी फॉलो की. दे पैक्ड आउट द मिडफील्ड. हमें वाइड एरियाज पे खेलने के लिए मजबूर किया. साका पे डबल अप कर. पर क्योंकि इस बार हम लोगों ने एनकेटिया को नहीं खिलाया था, हम लोग लेफ्ट से अटैक कर पाए. और टू बी ऑनेस्ट, दिस वाज अ इट वाजंट अ गुड गेम फॉर जाका. जाका ने जो चांसेस मिस किए Mhm. हैं, जो उसने, जो पहले सीजन में वो बहुत अच्छे से करता था कि वो जैसे ही उसके पास डेंजरस एरियाज में बॉल आता था, या तो वो ले ऑफ कर देता था या तो वो अंदर खिलाता था उसे. Mhm. पर इस बार उसने वही बोजो मूव किया, जो मतलब खींच खींच के शॉट मारना. पता नहीं क्या कर रहा था वो. तो उसका जाका के रिजल्ट लिए कुछ आई नहीं डोंट. रहेगा. हाँ. उसका रिजल्ट कुछ नहीं रहेगा. कुछ नहीं आता. यू जस्ट मतलब आप है ना इट्स मोर ऑफ एक्सपेक्टेशन शॉट देन अ लाइक एक्चुअली अ शॉट. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. तो हम लोगों ने काफी चांसेस वेस्ट किए इन द फर्स्ट हाफ. पर एक, बिफोर I get into the actual feelings about the performance, I have to get this off my chest. The refereeing in Premier League is horrible. हंस इट मत. इज आई मीन तुम लोगों को ना बहुत बेनिफिट मिलता है वहां से. तो तुझे कहाँ कहाँ तुझे फर्क नहीं पड़ता. कहाँ कहाँ लिवरपूल हैज we are the team which has I think which has gotten the least number of penalties this season. Yes, but you've gotten the most points from VAR, from ये wrong refereeing decisions. किस बात का है, किस बात का है.
हमारे टाइम एक भी ऐसा हुआ नहीं है कि भैया हमारे टाइम हमारे हमारी अगर किसी ने वार किया है उसके कोई हटा नहीं है। तो एट द एंड वार हैज ऑलवेज बीन लाइक नॉर्मल फॉर अस। अब दैट हैज रिजल्टेड इन अ पॉजिटिव थिंग फॉर अस बिकॉज द ओपोनेंट्स हैव बीन आउट। टू बी ऑनेस्ट, मतलब मैं आई एम नॉट बिलीवर ऑफ द कंस्पिरेसी थियरी दैट समथिंग्स गोइंग अगेंस्ट आर्सेनल. I am of the believer that refereeing is shit. The refereeing रेफरिंग in वाज the शिट। Premier League रेफरिंग is वाज शिट। आई मीन I liked, I mean, like to be honest, Trossard goals, like the goal was really good, but it was a fair like decision by no, the it VAR was a as well. fair decision. I agree. Like that decision of stopping, like the goal, the first goal being Mhm. disallowed, that was the correct decision. I'm not saying that that was not the correct decision. I would have loved the same decision going our way when we were playing Leicester at home and Ramsdale was held हाँ by हाँ। their defenders. He अरे was उसका completely held and they scored. So I would what is love this. what is your I just want to ask you what is your you can say what is your decision of what Harry Souttar did against Saka? That's a penalty. That's a rugby tackle. मतलब लेस्टर, हम लोग फुटबॉल खेल रहे थे, लेस्टर वाज प्लेइंग रग्बी. और देखा तूने सबसे ज्यादा येलो कार्ड किसको मिले? हमें मिले. Out of that game we came out with the most yellow cards somehow. And they did not वेल have a single yellow मेरे card. ख्याल से ओवर ओवर कंपनसेशन हुआ है जो कि सबित्सर के साथ होना चाहिए था, वो तुम्हारे यहाँ कर दिया। क्योंकि उसमें भी यही था, वुड फास्ट के साथ ही हुआ था, इस बार भी वही है, वही टीम खेल रही है। अब ये चलो ठीक है, ऑपोनेंट ने गलती करी करी है। मतलब it was the Harry Suter foul on Saka was as clear a penalty as it could. पहली इट बार, वाज क्लियर। पहली. मैं आई वाज वाचिंग दैट प्री लाइक मिड मैच शो, एंड उसमें लाइक एलन शेरर और उसमें तुम्हारा जो लेजेंड है, इयन दोनों ने राइट. बहुत अच्छी चीज कही थी कि स्पेशली एलन शेरर की पेनल्टीज जनरली कोई चाहता नहीं है देना। ठीक है, इट इज ऑलवेज कि भाई हो जाती गलती होती है, कोई ऐसे जानबूझ के कोई पेनल्टी नहीं देना चाहता। तो कहने की बात है कि भाई अगर आपका प्लेयर आपका स्लिप हुआ है या कुछ भी हुआ है, आप कुछ भी मतलब इस सेंस में कुछ भी बोलो, अरे यार आपके प्लेयर से गलती से हो गया या ही डिड नॉट इंटेंड, द रिजल्ट इज ही फाउल्ड। एग्जैक्टली. और नोबडी मतलब इंटेंड्स टू गिव अ पेनल्टी, हाँ, इट्स पर नोबडीज इंटेंशन, राइट? तुम लोग रीरेफ कर ही रहे हो. जब तुमने, मतलब तुमने गोल हाँ। दे दिया, यू ब्लू द विसल एंड यू सेड दैट इट वाज अ गोल एंड देन यू रीरेफ्ड इट हम्म। एंड यू डिसअलाउड द गोल. देन डू द सेम वीआर थिंग इसके हियर. अंदर भी आ सकता था उसके अंदर, या एग्जैक्टली, जस्ट रीरेफ इट. अगर तुम एक तरफ रीरेफ कर रहे हो तो दूसरी बार भी रीरेफ करो. यहाँ पे क्यों, मतलब जब 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 हमने गोल किया तब वार एक्चुअली गेम देख रहा था और उसके बाद दे स्टार्टेड वाचिंग टेलीटबीज. मुझे लगता है क्या कर रहे हो तुम लोग? और उसके बाद तूने वो गोल जो डिसअलाउड हुआ मार्टिनेली वाला, आई डोंट ग्वार्डियोला नो ने वेदर दैट वाज ऑफसाइड ग्वार्डियोला और ने थोड़े पैसे वैसे दे दिए होंगे। आई जेन्युइनली डोंट नो वेदर द मार्टिनेली गोल वाज ऑफसाइड और नॉट, क्योंकि लाइंस तो दिखी ही नहीं. दे नेवर शोड द लाइंस. चल क्या रहा है यार ये? मतलब प्रीमियर लीग में द रेफरिंग स्टैंडर्ड इज ऑफ संडे लीग. यू कंसिडर प्रीमियर लीग एज द बेस्ट लीग ऑफ लाइक आउट देयर फुटबॉल में, लाइक इससे बेटर लीग नहीं है, सब कुछ आप बोलते हो, लाइक वट एवर एडजेक्टिव, बस यही आपका बोलते हो कि प्रीमियर लीग इज दी लीग। उसके बाद आपकी घटिया रेफरिंग होती है, आपके प्लेयर्स यूरोप के अंदर जीत नहीं पाते हैं। एक एक टीम को छोड़ के यूरोप में एक टीम आपकी जीतती नहीं है। क्या किस बात का आप ये बोल सकते हो कि हाँ भाई आपकी टीम बहुत आपके मतलब आपकी लीग बहुत अच्छा खेल रही है? प्रीमियर आपकी लीग लीग का लेवल डाउन प्रीमियर हुआ है लीग मेरे इज द ख्याल से। मोस्ट वॉचेबल लीग इन द वर्ल्ड एंड दैट इज हाँ बिकॉज ये इट है, इज वेरी competitive. कॉम्पिटिटिव एज वेल एज इट हैज मनी। It has money. It has all the best players. मतलब आज साउथहैम्पटन जाके एक ऐसी टीम का प्लेयर ला सकती है कि जो यूरोपा लीग में. तो दैट इज अ बिग डील. वेस्ट हैम मतलब और इतने ज्यादा मतलब अनप्रिडिक्टेबल सीन्स चलते हैं ना। वेस्ट हैम लास्ट ईयर यूरोपा खेल रही थी, इस साल रेलेगेशन बैटल के अंदर है। तो मतलब फ्लक्स बहुत ज्यादा है पर यहाँ पे। क्या रेफरिंग इतना रेफरिंग शॉडी है. रेफरिंग का उतना भी घटिया है। और मतलब पीजीएमएल क्या करती है? हर बार ये होता है. सॉरी सॉरी सॉरी.
बस हम हमसे गलती हो गई। वो और वो सॉरी मेरे को इतनी ज्यादा गुस्सा आता है बिकॉज रॉड्री हैंडबॉल के साथ जो हुआ था अगेंस्ट एग्जैक्टली। एवर्टन लास्ट सीजन, भाई मतलब उससे ज्यादा क्लियर नहीं था। तुम्हारी साका वाले के लिए मैं बोल दूं एक बार के लिए, नॉट लाइक फ्रॉम माय ओन पर्सपेक्टिव नहीं है कि भाई ठीक है मेरी टीम का नुकसान हुआ है तो, बट साका वाले आप ही बोल सकते हो चलो बंदा गिर गया और उसे गलती से हो गई। रॉड्री वाले में थोड़ी की गलती से हुआ, उसका हाथ यहाँ लगा था उसका, और हाथ यहाँ नहीं था उसका। आप कैसे बोल सकते हो कि वो दैट वाज अ हैंडबॉल नहीं है, बाद में तुमने क्लियर सॉरी हैंड। बोल दिया सॉरी। अगर एवर्टन रेलीगेट हो जाती फिर क्या होता, बिकॉज दैट वुड हैव बीन अ वेरी क्लिनिकल मूवमेंट। एग्जैक्टली तो सेम लाइक अभी 2-3 गेम्स पहले जब ब्रेंटफोर्ड के सामने हुआ था। दैट वाज अ वो दैट वाज अ क्लियर अरे वो रेफरिंग तुम्हारे एरर। तुम्हारे वेस्ट हैम के साथ जो मैच हुआ था, सूचक वाला, चेल्सी सूचक ने हाथ चेल्सी से वेस्ट रोका हैम। था। सूचक सूचक ने हाथ से गोलकीपर रोका बन था। गया था उसमें। तो आप उसको मतलब दीज थिंग्स व्हेन दीज थिंग्स आर हैपनिंग यू लाइक दिस इज रियली, मतलब दुख होता है पता है ये चीज देख के कि यार आप। नाउ नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड हाफ, एक्चुअल। व्हाट अबाउट द सेकंड हाफ? एग्जैक्टली मैं उसी लाइक गेम के ऊपर इज ही आ रहा था। मार्टिनेली ओके दो? आई थिंक ही शुड बी फाइन। आई थिंक ही शुड बी फाइन। उसे it wasn't it wasn't a twist, which is the biggest saving grace. I think most players also prefer knocks than twists. कि जब twist होती है तब you lose a ligament. When it's a knock, you will be okay in like a couple of minutes. तो ज्यादातर swelling होगी और कुछ नहीं होगा. So I think Martinelli should be fine. पर ज्यादा तो अभी पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के ही पता चलेगा. Because I think Martinelli has been one of the major cogs in your system this season. Yeah. And Um, because if Martinelli is not playing, then you're left with Trossard on the left and Nketiah on the right. So you cannot play the preferred today's system. But how big was a miss? Like I would ask you, how big was a miss was James Madison? it was a big miss. बहुत बड़ा मिस था उनके लिए. हार्वी क्यों? बार्न्स अच्छी रन निकालता है बट पता नहीं कहीं ना कहीं ऐसा लगता है वो खुद में खो जाता है। या तो वो अकेला इतना ज्यादा फास्ट है और कोई उसको कैचअप नहीं कर पा रहा। देयर वाज दिस वन मोमेंट वेयर ही अलोन वाज देयर, कोई बंदा ही नहीं है जिसको वो पास कर सके, और उस समय इतना बढ़िया मूव था लेस्टर के पास। आई थिंक लेस्टर के सिर्फ दो बंदे वहां थे, वन और टू वो नहीं खेल सकता था क्योंकि ऑप्शन नहीं था उसके पास। कोई एक भी अगर होता ना कोई, और वार्डी वार्डी नहीं कर पा रहा वो चीज। ठीक है आप वार्डी को चांस नहीं दे रहे, वार्डी इज प्लेइंग ओनली आफ्टर 60th मिनट। तुम डाका को खिला सकते हो, ये नाचो अगर नहीं कर पा रहा तो तुम डाका को खिला सकते हो। मूव ऑन करते हैं आई मीन तुम्हारी गेम पे या मिड वीक. मैं चाह रहा था उसको जितना ज्यादा हो सके मैं मिड उसको और वीक. लेट कर दूं, बट ठीक है। द द मेंटालिटी मॉन्स्टर्स, द बिग डॉग्स. इट वाज एट एनफील्ड यू नो, इट वाज एट एंड एनफील्ड. दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट पक दैट आई वाज होल्डिंग ऑन टू, कि मैंने भाई एक एनफील्ड में। और बिफोर पता आई है हैंड जब इट दो गोल हुए ना, बिफोर जब आई दो हैंड इट गोल ओवर टू हुए। यू बिफोर आई हैंड इट हम्म, ओवर टू यू मैंने एक स्टैट देखा था जो मैं सिर्फ तेरे सामने रखना चाहता हूँ, उसके बाद में तुझे फ्लोर दे. सिंस क्लॉप टुक ओवर लिवरपूल, in every campaign, Liverpool has gone out in every Champions League campaign. Either Liverpool has gone out to Real Madrid, or once they went out to Atletico Madrid, or they won the Champions League. yeah, That has been the only three outcomes I, for I Liverpool. I know that. That's the point that I'm telling you. Madrid, and you know what? Where did we win the Champions League? In Madrid. What did you think about the game? We played well. ठीक है, starting में we Really? did start. We started. Okay. Let me finish my train of thoughts. Okay, we started well. ठीक है, Nunez का finish, that was, I mean, as the Beautiful. Italians do. It was beautiful. तो It was genuinely beautiful. उसके बाद उसका जो मिस था, क्या बोलते हैं कोर्तवा का, आई एम श्योर केडीबी वुड हैव लव्ड दैट मिस। और अच्छा मतलब ठीक है, हाँ. आई वोंट से इट वाज द रिवेंज ऑफ द किंग, बट एटलीस्ट गोल तो मिला यार। लास्ट ईयर साला इतना ट्राई किया था उसके बाद से एक गोल तो मिला उसके अगेंस्ट। हाँ. एंड दैट्स वेयर वी वर लाइक हो गया। सो देयर इज दिस मीम ऑफ Idris Alba, not every action deserves a response.
Sometimes you just need to sit back and see the game out. I think we just sat back. We forgot to see the game out. But I Joe do. Gomez. हाँ, but I was watching that a different podcast today. There they were discussing whether whether we should have what players we should sell or we should keep. For me, Joe Gomez has been on the selling radar since the past year. absolutely. He is not that fit. He plays one game good, one really good game, like he excellent game, but once in 3 months. He played a good game, I think last game or last to last game. उससे पहले उसने हालैंड को रोका था बस. He star on wings on a red shirt. That's it. मतलब आप नहीं कर पा रहे हो भाई. आई मीन आई एम डैम श्योर नैट फिलिप्स वुड हैव प्लेड बेटर. एंड आई वाज रियली होपिंग कि जोएल मैटिप खेलेगा बिकॉज द गाय हैज मोर एक्सपीरियंस. ही नोज हाउ टू टैकल विद करीम बेंजेमा. आप जो गोमेज को उतारो, जो गोमेज की हालत खराब कर दी. मैं बोल नहीं पा रहा बस शब्द. एंड नैट फिलिप्स could have started the Everton game. ठीक है, एज वी वर डिस्कसिंग लाइक इन द लास्ट पॉडकास्ट, आप अगर थ्री की फॉर्मेशन के साथ जाते हो, 3 मैन डिफेंस, नैट फिलिप्स कैन डू द मेन स्टैंडिंग गाय. क्लीन अप. बिकॉज क्योंकि वो बंदा नहीं, पेस नहीं है उसके पास, आई नो, बट ही नोज हाउ टू हेड द बॉल अवे. और उसका बेल्ट अच्छा है. तो और चांस दोगे तभी तो उसकी गेम रेटिंग बेटर होगी. एंड अगर तुम उसको चांस नहीं दोगे तो तुम्हारा जो उसको 15 मिलियन में बेचने का सपना है, वो 10 मिलियन 8 मिलियन ही हो जाएगा. और मैं तो जो आई there was this meme and I laughed like hell even though we lost. So the meme was, we paid 2 million for Charlton, for we paid 2 million to Charlton for Joe Gomez and we still feel that we were robbed. भाई क्या परफॉर्मेंस थी उसकी, जो गोमेज की. आप कहीं भी भाग रहे. एलिसन, गंदा गेम था उसका. ठीक है, द गाय कैन टेक वन गंदा गेम. इतना गंदा थोड़ी. मैं ये चीज बोलता हूँ, 2 गोल लकी थे उनके. बट अगर वो 2 गोल नहीं भी होते ना उनके, तो भी तो और भी तो भी वो लोग जीत ही जाते. और एक पेनल्टी का, एक मेरे हिसाब से वो पेनल्टी थी जो दानी कारवाहल ने उसको पुश किया था नूनेज को. तो वो मतलब वो टच एंड गो वाली बात थी, 50-50 वाली बात है. अगर आपको देनी है दे दो, नहीं देनी नहीं दो. लाइक नोबडी कैन क्वेश्चन यू कि भाई आपने नहीं दिया, दी वाली बात. आई थिंक जब बड़े प्लेयर्स या बड़ी टीम आती है ना, तो रेफरीज थोड़ा सा ना, बायस नहीं बोलूंगा, बट रेफरीज थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कोई बड़ा वो देने से. आप, हम इतना अच्छा गेम बना सकते थे, दो दो गोल से हम ऊपर है. आप स्लैक करके, विनीशियस जूनियर क्या प्यारा प्लेयर मतलब मिला है उन लोगों को. आई मीन, यू लेट दैट गाय कुक एंड यू कैन से दैट यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ द कंपटीशन. एग्जैक्टली. फर्स्ट गोल वाज सच अ क्लास. एंड टू बी फेयर, एलिसन के पास से बॉल निकालना, जिसने सेकंड गोल होते होते रोका था, सेम प्लेयर सेम तरीके का, एलिसन ने रोका था. फर्स्ट वाला कोई चांस नहीं था, बहुत प्यारा गोल था. सेकंड गोल जो हुआ, सेकंड गोल अनलकी थे हम लोग. गंदा चॉइस था बट अनलकी भी थे. वो कहीं भी जा सकता था क्योंकि विनीशियस जूनियर की आंखें तक नहीं देख रही थी उस टाइम बॉल को. थर्ड गोल जो गोमेज की गलती है, बट टू बी फेयर इतना गंदा टैपिन था वो. मतलब वो टैपिन क्या था, सॉरी, वो बस उसने एक हल्का पुश किया था बॉल को, बेंजेमा ने. जो गोमेज अगर हाथ पैर नहीं भी अड़ाता उसके ना, एलिसन ऐसे भी लेट, वो एलिसन नहीं भी करता ना कुछ, तो भी बॉल अंदर नहीं जाती. भाई ने पैर अड़ा दिया, ले भैया, गई अंदर. सॉरी, वो चौथा गोल था. तीसरा गोल क्या चौथा, हुआ, एडम तीसरा एडर मिलिटाओ. मिलिटा. कहाँ खड़े थे, मतलब कहाँ, क्या हम खड़े क्यों थे. लाइन आई लगा एम के खड़े टेलिंग हुए. यू, वी आई फेल्ट what Barcelona fans would have felt when corner taken quickly happened. क्योंकि ये फ्री किक टेकन क्विकली थी, वो इतना जल्दी रिएक्शन आया, लाइक फ्लैश तू था क्या. मतलब जिस तरह से तुम्हारे पूरा डिफेंस एक लाइन में खड़ा हुआ था,
और स्क्रीन की तरफ देख रहा था, पिक्चर चल रही थी क्या वहां पे? क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे मैं तो ये था कि मतलब तुम लाइन बना के क्यों खड़े हो वहां? जोनल मार्किंग। कोई पर पॉइंट है, उनका एक भी प्लेयर नहीं हिला एक्सेप्ट एडर मिल्टाओ। हाँ। मतलब ऐसा कि बात हो गई थी क्या कि मैं तेरे को यहाँ बॉल दूंगा और वो बॉल हवा में अटक जाएगी, फिर तू आके आराम से अपना टाइम लेके उसको हेड कर देना अंदर। यार हेंडरसन शुड हैव लेस प्लेइंग टाइम नाउ, बट प्रॉब्लम है ना, खिला किसको सकते हैं? हम खिला ही नहीं सकते। कोई है ही नहीं तुम्हारे पास। हम हार्वी एलियट को नहीं खिला सकते थे इस वाले मैच में। दो वी बच्चों नीडेड को खिला कैरेक्टर्स के। लाइक वी नीडेड कैरेक्टर्स लाइक हेंडरसन। दिस और गेम वुड हैव बीन बेटर इफ यू हैड, मतलब हाँ, तो वो एज ओल्ड स्टीरियोटाइप की तरफ चले जाएंगे। दिस गेम वुड हैव बीन सो ग्रेट इफ यू हैड वाइनाल्डम। यार वाइनाल्डम, वी नेवर रिप्लेस वाइनाल्डम, आई थिंक दैट्स द प्रॉब्लम वी हैड। I'm just hoping that we can get Guardiola next season. अरे भाई, इतना एक्सपेंसिव है वो। इज गोइंग टू बी यार इज गोइंग टू बी वो बैटल 120 होगी वो मिल। 80 मिल आई थिंक। तो देख, 80 मिल ऑन ग्वाडियो, 120 मिल ऑन बेलिंगम, दैट्स लाइक 150, 200 million on two players, 150, 230 easy, million easy on 150, two easy. players. You need so many more. I think you need at least five or six more. You need at least three We midfielders, need, two starters, one I'm back. telling you, we need to offload. Adrian is going. We need to sell Kelleher for his own good. Yeah, He is the best number two, and he is too good to be a number two. I think he can play as a keeper for one of the top six sides. इतना मतलब बहुत अच्छा, and plus he is a penalty specialist as well. yeah. So he is giving you that edge. तो दो चीजें हो गई कि आपके दो जा रहे हैं, तो यू नीड अ गुड नंबर टू कीपर। और हमारे यहाँ का जो यूथ सेटअप का मार्सेलो पेट्रो होगा, वो शायद स्टेप अप कर जाए। सो यू गॉट टू कीपर्स। वी So you नीड टू need a सेल जो keeper. गोमेज। Let's keep वी a couple. You need a keeper. वी नीड टू सेल जो गोमेज। वी नीड टू सेल माटिप। वी कैन have as a last choice. I would rather Fourth have Nat choice. Phillips rather than Joe Gomez. Okay. So you Fifth need at choice, I'm least two saying. center backs. I'm saying fifth choice Fifth because because Van Dijk, Ibu Konate, and I want one more center back. center back exactly because I'm ready to sell Joe Gomez as well as that Reece Williams, So you will need. or at least send him out on loan. So you'll need. So that makes it number two keeper, Guardiol, or an option for that. Yeah. Then Then when it comes to midfielders, we need a truckload of them, you need at least two, in my opinion. at least three. One backup. Thiago is 32. Thiago Yeah. will be entering the last season, right? Henderson is not good. Milner, to be frank, he should go into coaching. He should become a player manager or something like that. Or he should at least go into coaching for Liverpool young side. Yeah. ठीक है, तो मिलनर का वो सीन हो जाएगा। हेंडरसन का रोल कम हो जाना चाहिए। आपका थियागो है, थियागो लंबा नहीं चलता है, ठीक है, सीजन में 2-3 इंजरी आएगी उसकी। फबीनियो शुड हैव अ reduced रोल एटलीस्ट। आई मीन देयर शुड बी हेल्दी competition between him and Bajcetic. Tyler, we have good options on our youth setup. Tyler Morton is there, Bobby Clark is there. Bobby Clark also showed like his class today. Like so, basically in Premier League Two, there's a match between Liverpool and Leicester. Liverpool won 7-1. So it was a sad day for Leicester. तो उसके अलावा एंड तो ये हो गया एटलीस्ट, मैं बता रहा हूँ। वी आर तीन लिंक्ड विद midfielders. जूड बेलिंगम। वी आर लिंक्ड विद जूड बेलिंगम एंड Five या सॉरी, players. नाबी केटा जाएगा। फ्रैंकली अभी तक क्यों था नहीं पता। एलेक्स ऑक्सलेड चेम्बरलेन जाएगा। तो दो, एटलीस्ट 3 से 4 कीपर हमारे कम, वो 3 से 4 वो कम हो रहे हैं, मिडफील्डर्स कम हो रहे हैं हमारे। Yeah. तो वी So you need नीड three एटलीस्ट, midfielders. हाँ, तो बेलिंगम, वी आर ऑल्सो लिंक्ड विद मेसन माउंट Yeah. एंड इफ वेस्ट हैम goes down,
we can go for Declan Rice. I don't think that Declan Rice is going to leave. I think But Declan if Rice is either going to Chelsea or Arsenal. I think it's going to be one of these two teams. it might happen, it might happen. I'm not Yeah. saying no, but all I'm saying is we are interested in him because we see him as a potential number eight, as in what Jordan Henderson plays. But Mason Mount can play as what Jordan Henderson plays. Me- He's the same type Mason of Mount player. can he can yeah, but he tends to be a bit more, you can say, advanced role. He could be so what so your Jude this makes it three number eights. Jude Bellingham is a number eight, Mason Mount Jude is a number Bellingham, eight, and Declan Rice Jude is a number. Be- Jude Bellingham would play the role which Thiago plays, but he'll have a free flow pass. कहीं भी जाएगा, he is allowed. Hmm. थियागो क्या रहता है, थोड़ा सा पीछे का रोल रहता है बिकॉज ही इज मच मोर लाइक ही इज द कंट्रोलर. Hmm. ठीक है, जूड बेलिंगम के साथ आप लाइक वो ज्यादा आगे जाएगा, शूट ले रहा है आज के टाइम पे, जैसे डॉटमंड में भी देखे, ही इज रेगुलरली क्रिएटिंग. यू वोंट सी, यू कैन से, अगर आप स्टेटिस्टिक्स की बात करोगे तो यू वोंट बी सीइंग नंबर्स विद थियागो. यू नीड टू सी द मैच टू सी व्हाट थियागो डज. फॉर बेलिंगम यू कैन सी लाइक स्टार्ट्स एज वेल. ये चीज है. तो ये आ जाती है. उसके बाद फॉरवर्ड्स के अंदर मेरे हिसाब से हम किसी को बेच नहीं सकते, बट वी नीड टू गेट अ बैकअप फॉर साला. For Salah, साला, वी डोंट हैव एनी. हार्वी एलियट कैन नॉट डू दैट. साला के रन्स होते हैं जो कट्स होते हैं, प्लस उसके अलावा साला का जो, मतलब साला का पेस वगैरह, मतलब साला इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर. but who ऑल do you think is a good backup for Salah? तेरे दिमाग में है कोई? किएजा कैन बी, फेडरिको किएजा, Rodrigo, यूवेंटुस वाला. he'll be available on a cheap. हाँ, He'll be available on a cheap. वो अगर वो आ जाता है तो आई मीन वी हैव बीन लिंक्ड विद हिम इन पास्ट, तो वो एक अच्छा ऑप्शन रहता है. बहुत ही इंजरी प्रोन है तो। ये बैकअप है ना. मतलब तुम कितने और यू ऑलरेडी हैव अ वेरी इंजरी प्रोन टीम तुम्हें। यार फिर ना एक्चुअली क्या हो रहा है, हमारा जो यूथ सेट होगा बेंडोक है. बेंडोक इज ऑल्सो स्ट्राइकर हु कैन प्ले फ्रॉम द राइट साइड. साका, पता है साका पिन डाउन करेगा नहीं डील, बट लिवरपूल वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टेड इन साका लास्ट सीजन. Saka, तो Liverpool and City both were interested. Even before he decided to sign a new deal, City was extremely interested. अभी तक उसने साइन किया नहीं ना शायद. Hey, but it's going to happen. Saka, Saliba, हाँ मतलब and इट्स Martinelli, all मोर और three लेस of them. हियर वी गो. Huh? इट्स मोर और लेस हियर वी गो. Yeah, and the reason is Saliba, Saka, and Martinelli. The reason why they're signing these contracts is because they're not going to get the playing time at this level in any other team. Even if they go to साका माइट, Liverpool, they're not going. साका माइट, साका माइट. Saka will not get this level of playing time in City. सिटी में नहीं मिलेगा, सिटी में नहीं, नहीं मिलेगा. लिवरपूल में मिल जाएगा, क्योंकि साला इज वेरी लाइक ही इज टू ओवरबर्डन. अकेला है उसके, मतलब वी कैन नॉट नॉट हैव हिम. नहीं। हमारे पास लुइस डियाज आया था, हमारे पास जोटा आया था, हमारे पास नूनेज आया था, हमारे पास गैक्पो आ जाता है, जो ये चारों लेफ्ट साइड वाले हैं, जो सेंटर भी खेल सकते हैं. लुइस डियाज को छोड़ के बाकी सारे सेंटर भी खेल सकते हैं. सेंटर में हम फिरमीनो को भी डाल सकते हैं. राइट में कोई और है ही नहीं, एक बंदा नहीं है हमारे पास. तो Uh, if I'm being honest, अगर तुम्हें right side में if you need a player and if you need as a someone as a backup to Salah, think you should go for someone a little bit younger. मतलब हाँ साका का जो एज ग्रुप है वो ठीक है पर किएजा वाले एज ग्रुप में मत घुसो, क्योंकि ऐसा ही इज कितना है, ऑलरेडी लाइक 26 27 ट्वेंटी के सिक्स आसपास ट्वेंटी का है ना. हाँ, अच्छा वही. तो बात ये है, साला इज देयर टिल 24 और 25, 24 और 2025. या साला एंड क्लॉप, दे बोथ विल बी लिविंग टुगेदर एज एज इट स्टैंड्स टिल टुडे. तो वो चीज़ है. तो साला डज नॉट हैव अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग एज इन कि हाँ 2 3 साल है उसके पास. बट अगर हमारे पास, इफ वी कैन गेट एनी प्लेयर somewhere around the age of 22 23, या that's why I was like saying अंडर Saka. स्टडी एंड अंडर अंडर स्टडी। स्टडी हो गया, और प्लस साका के पास स्पेस वगैरह सब कुछ है. तो साका, साका इज अ वेरी लाइक
Not very, but he can be molded into a Salah thing. Yeah, yeah. तो He वो he चीज है. he's he can do what he's a little different than Salah in certain हम्म. way. क्योंकि वो थोड़ा ना वो he has a little bit of like a typical winger sort of a thing. तो वो हम्म. थोड़ा टिपिकल विंगर भी बन सकता है, वो टच लाइन को हक भी कर सकता है और वो कट इन हम्म. भी कर सकता है, वो दोनों चीज कर सकता है, तो इज वेरी वर्सेटाइल दैट। एनीवे, साला. हाँ हाँ हाँ. बट एनीवे, साला वही है ना, साला कैन प्ले एज अ स्ट्राइकर एज वेल. वो या वाली चीज आई थी, तो यू कैन हैव अ मच मोर improved 4-4-2 with या two pacey strikers there. बट सो इन Yeah, टोटल यू नीड एटलीस्ट 6 प्लेयर्स, सो दैट मेक्स इट अ कीपर, अ सेंटर बैक, at थ्री least five to मिडफील्डर्स six एंड अ players. फॉरवर्ड। At least 5 to 6 players. तो इसमें Forward is तुम not दो too 200 important. मिलियन दो Forward प्लेयर is पे not too खर्च नहीं कर important सकते। for us right now. Forward is not too important. We'll go all in for Bellingham. ये तो लिखवा ले मेरे से. I know. Guardiol नहीं भी आएगा ना, तो we need at least a good, you can say, a tall, fast center back. हैरी सूटर। सो द लिवरपूल टीम So, फॉर क्रिस्टल पैलेस इज mhm. एलिसन, ट्रेंट, मैटिप, वैन डाइक, सो नो गोमेज, रॉबर्टसन, Henderson, Milner, Keita. Jota is back, which is a big plus. Jota, Salah and captain. So front line बहुत अच्छी दिख रही है, but midfield is looking very weird. We want Gakpo to play in the midfield now. I mean, I want, क्योंकि नहीं point है वो खेलेगा. हाँ, If you're having these players as your starters, at least go with a 4-3-2-1 for a 4-2-3-1 position, like formation. क्योंकि तुम्हारे पास और कोई है नहीं. तुम्हारा मिडफील्ड इतना ज्यादा, मिलनर और हेंडरसन नहीं भाग सकते भाई. तुमने बेंच में किसको बिठाया? बाइसेटिच बैठा बैठा है, फabinho बैठा है, कर्टिस जोन्स बैठा है, हार्वी एलियट बैठा है, फाबियो कार्वालियो. आप किसी को अपने चांस नहीं दिया. यू हैव नॉट प्लेड this Alex Oxlade-Chamberlain in his preferred centre midfield role. He could have been on the bench. I mean, I'm not feeling very, you know, optimistic. comfortable with these. Yeah, I Yeah. don't. I don't feel. I think I don't feel comfortable either. Considering, I mean, who do they have? Who do they have, like, in competition? Michael Olise, Yeah, fast. yeah. ठीक है. उसके अलावा अपना ये आता है जॉर्डन आयू. आई नो ही इज जस्ट अ फास्ट गाय, बट ही इज जस्ट फास्ट. लोकोंगा इज फ्रॉम आर्सेनल, राइट? हाँ, लोन पे है क्या वो हाँ, लोन पैलेस पे में? है। ठीक है. तो जेफरी श्लुप, गुड फास्ट. चीक डुकोरे. मैं बता रहा हूँ ना, सारे के सारे इन लोगों ने फास्ट प्लेयर्स लिए हैं. हमारे पास फास्ट प्लेयर्स ही नहीं है. हमारी मिडफील्ड ओवर होने मेरे को लग रहा है होगी. चांस ही नहीं. यू कैन नॉट हैव जेम्स मिलनर रन 20 times in 20 minutes. Exactly. क्योंकि गेम ही ऐसा है लिवरपूल का. आई एम जस्ट होपिंग कि वेरा का ये वाला मैच भी उतना ही खराब जाए. I mean, we need wins in PL, Yeah, you and need specifically this win. You need this win. and You can, specifically after what happened with Madrid. exactly, So because the other matches, and I've kept my tab open. Okay, so the first match, Wolves versus this Fulham. Fulham You predicted a 1-1 draw, and that's what fucking happened. three 3 points. That's a three-pointer. 3+1. Yeah, ठीक है. Second was Everton versus Aston Villa, 2-0. Nobody said this. yeah. Nobody expected. I mean, Aston Villa to win. I mean, exactly. So, I That's mean, bad on that's us. Matlab, we are really overestimating Everton at this point. I think they are down we are not overestimating Everton. We were estimating. We played our bet on Sean Dyche rather than Everton. as an Everton because these So Everton players, they are strippers. These Everton players, they मतलब वो डायलॉग नहीं है, किसका डायलॉग है, मैं भूल गया, वो 90s की मूवी का, कि बोलने वो वाले डायलॉग्स ही होते थे उनके. याद है, बुझा लो अपने अच्छा मन हाँ की वो. प्यास।
हाँ 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 हाँ। That's Everton whenever a team comes to good वो is माधुरी दीक्षित वाला। That's Everton. लीड्स Uh, लीड्स हैड अ रियली, I mean, you can not expect this guy to score. yeah, Junior Firpo. yeah. Left back scoring, that's a new one. That's a six And pointer. That's a six no, pointer in a relegation fight, which means Southampton are definitely gone. There's no way back for. do you think so they have a really good this center defender, Armin Bello Kochap. We can also go with that guy. I mean, I think there Yeah, was Bella Kotchap could be someone good for Liverpool. He could be someone good was for. saying that he can be molded into a next Van Dijk as well, because he's tall, bulky, and all that muscular guy. Yeah, but he could be So good for Liverpool. That's a good and backup. we can get him for really cheap if 20 Southampton goes million. down. 20 million. और I मेरे don't को लग think रहा it's. है अगर 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 रेलेगेट हो गए तो हो सकता है कि उससे भी कम में आ जाए। उससे कम चांसेस में तो हैं। नहीं. 20 million would stack for Bella Kotchap. So for Leeds Southampton, you at least got the result right, not the score but result. So I that's did not trust Southampton. And I knew Leeds will find a way to win. And Javi Garcia, first game in charge, was going to happen. you, my friend, were happy today. Leicester Arsenal. So Yeah, we both got 1 point. Nobody got the score right. 1-0. As for West Ham versus Nottingham, both were horribly wrong. They battled for a score nil. So these were like second half scores. Yeah. Let's quickly Let's talk touch about United, yeah. United. Yeah. So before we get into the result and everything, uh, these Muppets just celebrated a playoff win in the Europa League, like they've won the Champions League. And they always complain about us over celebrating. I और mean, उनकी you will get a chance in the final now. or this is not even like this was a Barcelona team without Gavi, without Pedri, Pedri. and without their usual midfield. Yeah. And still Barcelona for the first 45 minutes was the better team. I'm telling you, Eric Ten Hag has done magic for Oh, United. absolutely. Absolutely. And Yeah. Rashford, I don't know how, but Rashford should stop scoring goals now. I mean, he should be hitting his peak. No, He should. I think what Ten Hag has done is that this team was chronically underperformed. Mhm, United are not overperformed. United are where they should with this team. mhm. With this team, United should be in the conversation of winning a title. So मैं बता रहा हूँ ना, I mean, United has been really good this season, and especially Martinez. Lisandro Martinez, I mean, that guy is a gem. I mean, that guy knows how to read ball. yeah, but at the same time, if you look at this way, मतलब जो मैं United fans का discourse देख रहा हूँ, according to them, they have the best keeper. Yeah, According to them, they have the best center back pairing in the league. They have yeah, the best DM in the league. They have the yeah. best creative midfielder in the league. They have the best forward in Left the winger, world, left winger. Marcus Rashford. They have the best left They back in have the a league. they they think he should win the Ballon d'Or this season. Yeah, और एडम मकोला को जानता है वो हाँ हाँ, वो स्ट्रैटफोर्ड पैडक. he said that Saka that he would prefer Sancho over Saka. So these That's guys, as bullshitty. That's utter bullshit. that's utter bullshit. So if you think that you have this of a great team and they have the best manager in the league, Eric Ten Hag, and you are Yeah, 3 points behind Man City, and when you ask them, "Are you in a title race?" Oh no, we are not in a title race. If you have everything the best, you should be winning the league by a country mile. And you got you cannot slapped up say that 6-1. you cannot say that Sancho is a better player than Saka, and still be said that yes, this guy And then is still get taken sane. seriously. He gets भाई taken आप seriously. फालतू बातें कर रहे हो. Saka is way better than Sancho. Sancho is 007 for fuck's sake. Sancho has scored 2 goals this year.
and suddenly he's better than Saka. I don't get how these United fans' brains work, and especially all three of them on that YouTube channel, the club. All three of them are Rory Jennings losers. and all that. Rory Jennings, Bowie, Rory and Adam Jennings is McCullough. as All three shitty of a guy them. as one can be. I mean, he says sorry like anything. Sorry, I was wrong, Erling Haaland. I mean, the guy fucking scored 26 goals. He scored a fucking club record today. Yeah. वो बंदा कुछ हफ्ते पहले वही सॉरी वाली आ गई थी उसकी वीडियो मैं था आई एम टेलिंग यू दिस गाय विल नॉट स्कोर आई मीन तो भाई तू नहीं होगा भाई तू पागल है क्या तेरी After टीम के गोल नहीं हो रहे last तेरी season, टीम में तीन गोल नहीं है after Arsenal lost the first three games, he said categorically, Arsenal will get relegated. That's what he said after three games, and we were this in the top guy four race after this six guy months. just says was you know that Twitter account United Tray Oh yeah, that he's the most he says miserable. exactly what he writes the shittiest of things Rory Jennings you can see you want your day to go get better, you watch a Rory Jennings rant about Chelsea. I watch that when I'm having my food. Yeah, I'm telling you, I'm getting inject better it in my nutrients out of that. veins. But I mean, anyway, Rory Jennings and Adam Cola, and who's the third guy? Bhuvi, he's a City fan. He literally said his prediction was, and that wasn't like at the start of the season. If it was at the start of the season, I would forgive him. At at the start of the season, he said Arsenal will finish eighth. And right now, 2 weeks ago, when City beat Arsenal, he said Arsenal will finish fifth. Fifth. We are 2 points ahead of them. Nobody can say that. At least मैं आप How थर्ड are बोल दोगे these ज्यादा से guys ज्यादा आप getting taken थर्ड से seriously? थर्ड बोल दोगे ज्यादा से थर्ड से ऊपर तो थर्ड से नीचे तो नहीं जा सकती भाई आर्सेनल बिकॉज इट इज अ थ्री हॉर्स रेस We are not finishing below United. The reason why तो यार यूनाइटेड पता को है अभी भी लिवरपूल जाना है. They need to go to Anfield. They need to go to St. James's नेट Park. जेम्स पार्क एग्जैक्टली And वेस्ट हैम के साथ मैच है Brighton. और ब्राइटन के साथ मैच है यार इवन तो होम है बट ब्राइटन ब्राइटन है इस सीजन मतलब उन लोगों ने जो जो मतलब हल्ला मचाया हुआ है वर्ल्ड कप से, तुम्हें देख के लगेगा कि मतलब वो हर हर वीक वो लोग किसी चैंपियंस लीग टीम के सामने खेल रहे हैं. They've only been playing relegation fodder since the World Cup. ये चार्ल्टन के साथ मैच जीत के वो आपके क्यों किस बात का हल्ला है आपका मतलब ऑनेस्टली लाइक आई वाज जस्ट टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑफ माइन लाइक द बार्सा फैन द गाय वाज सेइंग कि यार हमारी आधी टीम नहीं खेल रही थी हमारी पेडरी का भी नहीं खेल रहे थे देम्बेले नहीं खेला था वो बोल रहा कि देम्बेले अगर होता वो पेस में मार लेता उन लोगों की हमारे पास पेसी विंगर्स ही नहीं थे हमारे पास एग्जैक्टली. अंसु फाटी जब से इंजरी हुई तब से ही इज नॉट द सेम गाय ठीक है एक बात तो है कि टेनहाग ने मेंटालिटी बहुत रिवाइव की. Yeah, टेक्निकली तो काम किया ही है उसने. as I said last time, as I said Yeah, last time, the guy, if you're saying, I want to see you smile again, I mean, that shows the faith he has in the player's ability as well. exactly. I mean, we have a problem with United fans. We don't have a problem with United as such. United, yeah. I think United as a team, they're playing very well. But एक चीज है, अगर टेक्निकली एनालाइज करो तो यूनाइटेड के खिलाफ टीम्स उस एटीट्यूड से नहीं खेलती जिस एटीट्यूड से इस साल आर्सेनल और सिटी के खिलाफ खेल रही है, या फिर पिछले साल लिवरपूल के खिलाफ खेल रही है, जो कि था हैंगिंग ऑन टू डियर लाइव्स. मतलब ऐसा नहीं है कि वो लोग सब अ, मतलब एकदम 11 मैन बिहाइंड द बॉल, सब लोग हाँ बॉल को हाँ प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सब एकदम घुस चुके हैं अपने शेल में, आग जिस द तरह बस से. लो ब्लॉक वो नहीं हो रखा एग्जैक्टली exactly, जो जो सिटी के खिलाफ होता है, जो आर्सेनल के खिलाफ हुआ है इस सीजन, जो पिछली जो सीजन लिवरपूल के. एटलेटिको मैड्रिड करती है बहुत अच्छे से एग्जैक्टली exactly, जो इनके साथ उतना हुआ नहीं है. एडम कोला सेड सैंचो इज बेटर देन दिस साका वो बंदा चल हट चूतिया दीज वर द वर्ड्स बकवास कि नोबडी कैन से दैट कि वो बोल रहे कि यार गोल्स अगर हम गोल्स और उनकी नहीं ना भी बात करें ठीक है आप फील्ड में कंट्रीब्यूशन की बात करें तो भी यू कैन नॉट से कि साका से बेटर है सांचो वो बोल रहा है यूनाइटेड वाले बार्सिलोना यूनाइटेड वाले मैच में जब तक गोल नहीं हुआ था उसको 2 या 3 बार ही दिखाया है सांचो पूरे मैच में
अब कहाँ से बोल दोगे उसका कंट्रीब्यूशन? साका आप नहीं भी दिखते ना तो भी आधे टाइम जमीन पे आपको मिलेगा, बिकॉज प्लेयर्स आर फाउलिंग हिम Exactly. They double up on him. रेगुलरली, What do you think about predictions for the Man United Newcastle game tomorrow? I want Newcastle who's to win. who's home game it is? It's United's, right? Wembley, Wembley. Carabao Cup Okay. final. अच्छा, Carabao Cup final. Yes. The back line is fit for Newcastle. Yeah. Trippier is Their fit, defense Schär is is fit, Botman is fit, and Danman. So defense is good. The only problem is they have to play low risk carriers. They don't have any option. that is the only risk. And the last When time Loris Karius played in a final, he didn't make Karius, it. I mean, I wouldn't say I wouldn't say shit like that. All I'm saying is Karius hasn't played in a long time. Yeah. So rather than saying that उसका final खराब गया, भाई concussion में था वो बंदा, ठीक है, ठीक है, to be fair, ठीक है, memes वगैरह ठीक है, but the guy was under concussion. Yeah. वो वो इतना खराब तो कीपर नहीं होगा ना, बट द पॉइंट इज वो बंदा कॉन्फिडेंस नहीं है उसके पास, मैच फिट नहीं है वो. और गेम टाइम नहीं है, हाँ, और वो मैच अब फिट आ नहीं रहा है है. डायरेक्टली। मैच फिट नहीं होगा वो, और ऑप्शन नहीं है उनके पास, कैरियस ही खेलेगा। आई मीन, had I been there, I would have played Danburn in place of him. सही बता रहा हूँ, द काइंड ऑफ स्पैन्स ही द गाय हैज, वो नहीं, वो रुक जाती बॉल कैसे ना कैसे करके। तो मिडफील्ड उनका, like it will be really strengthened by like getting Bruno Gimenez again. इज तो ब्रूनो फिट? आई ब्रूनो के साथ तो रेड कार्ड वाला सीन चल रहा था ना, हाँ, वो है ना, गेम में खेलेगा ना वो. वो आ जाएगा। ओके, चलो, थैंक गॉड. The only problem that I'm seeing is not having Nick Pope. Other than that, I think it's a fair, even match. या It's a match like both the tactical masterclass वाली बात रहेगी, because they both will be having, अगर Rashford नहीं खेलता है तो they both will be having one major player who has made the difference in this season short. अगर रैशफोर्ड खेलता भी है तो भी क्योंकि ये लो ब्लॉक होगा. आई डोंट थिंक हाँ, ये न्यूकासल इज होगा लो गोइंग टू ब्लॉक। गो विथ लाइक एन एक्सपेंसिव गेम. दे आर गोइंग टू गो विथ द लो ब्लॉक. और सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूकासल हैज बीन इन अ फाइनल फॉर द फर्स्ट टाइम इन 22 अगर को 23 समथिंग like ईयर्स. they last time they were in they 99. won something, it was in 67, they won something in They won 67, something in 67, and this is the first final 67 or since 67 99. years I think. So they'll be craving for this trophy like anything, Geordies will fill out the because stadium, and the atmosphere is going to be brilliant. really good. And the players in their minds, क्योंकि एक बात तो समझ लो, चलो यूनाइटेड का ट्रॉफी ड्राउट है 5 साल से, दिस एंड दैट एवरीथिंग, तो वो चीज यूनाइटेड के प्लेयर्स के दिमाग में तो होगी. बट एट द Who do you सेम टाइम not want to कंपेयर win दैट the ट्रॉफी trophy? ड्राउट टू न्यूकासल ट्रॉफी ड्राउट. Newcastle, yeah. Who वो do you लोग वो not want to win the trophy? दे विल ऑल गो डाउन इन हिस्ट्री अगर इफ दे विन दिस. नहीं, all I'm asking is, who who would you prefer not, like, who do you want not to win the trophy? United or Newcastle? यूनाइटेड Same. 100%. I have to say that. नो, यूनाइटेड, क्योंकि मुझे पता है आई एम गोइंग टू हेट न्यूकासल इन अ कपल ऑफ इयर्स. आई नो दैट. बट Everyone will. इन अ Because वे, Eddie Howe has done this without spending money. exactly. That is the crazy part. But I think the reason why I don't want United to win is because अगर वो लोग ये गेम जीते, then momentum would be on their side. I They mean, would, क्योंकि वो जो जो ग्वार्डियोला करता है ना, he always wins the Carabao Cup and then he goes yeah. on to win more trophies. Because वो कहता है कि खून चख लेती है. हाँ. उन्हें पता चल जाता है कि वो ट्रॉफी का टेस्ट क्या होता है. मैं नहीं चाहता कि हम्म. वो ये यूनाइटेड टीम को मिले. तो क्या Because स्कोर प्रेडिक्शन क्या है? व्हाट डू यू सी स्कोर? I'm not predicting right now. I want Newcastle to win. That's why I'm not predicting anything. या Because it'll be, वो गंदा गेम नहीं चाहिए कि हाँ यार ठीक है 1-0 वाला हो गया। मतलब वन आई जीरो भी अगर हो, तो जैसे चैंपियंस लीग वाला जो हुआ था फाइनल, वैसा हो कि वी कैन से दैट यस, बिकॉज ऑफ वन पर्सन, लाइक दे अटैक्स फ्रॉम बोथ द साइड्स वाली बात है। आई आई वांट डोंट दिस टू बी अ हाई स्कोरिंग मैच। I don't think it's going to be a high scoring.
आई दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, आई वांट दिस टू बी। या दोनों का डिफेंस बहुत प्यारा है ना, इसलिए इतना हाई स्कोरिंग हो ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है। मेरे हिसाब से Just a question, who do you हाँ, think will play, Diego Dalot or Aaron Wan-Bissaka? I think he'll go with hmm, that's a good question. I think he'll go with, क्योंकि it's Newcastle, it's better to go with Dalot than Wan Bissaka. और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यूनाइटेड विल हैव मोस्ट ऑफ द बॉल, सो व्हेन यू हैव द बॉल यू शुड नॉट गो विथ वन बिसाका क्योंकि वो हक Yeah. देगा, और उसके ऊपर होगा कौन? सैन मैक्सिमम। तो अगर सैन मैक्सिमम हाँ, तुम पर है तो इट्स गोइंग टू बी, क्योंकि वो तुम्हें प्रेस करेगा, but isn't that a काउंटर really अटैक। bigger gamble? Because it's like Wan-Bissaka is better defensively than Dalot. या बट व्हेन द ऑपोजिशन हैज द बॉल, यहाँ पे यूनाइटेड विल हैव मोस्ट ऑफ द बॉल, Like क्योंकि I'm really excited to see this battle between Dalot and this Saint डालो Maximin. एंड सैन मैक्सिमम और What about Luke Shaw and Tyrell Malacia? लूक शो 100%। Luke Shaw, right? Experience. You need experience in this sort of game. Can't go with Varane and Martinez. You cannot have Varane Harry Martinez. Maguire. It's standard. Yeah, वही होगा उसके, अगर if they play Maguire, I'm putting $100 on Newcastle. Newcastle to win. I think Weghorst is going to be important in this game क्योंकि उसकी जो physicality है वो Mhm. वो बहुत काम है this game. और फिजिकलिटी ही चाहिए हाँ, आपको सेट पीसेस में, it फिजिकल is good चार उनके जो चार हैं, आप उनके अगेंस्ट सेट पीसेस, यार सेट पीसेस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस मैच के अंदर। क्योंकि तुम डैन बर्न के सामने लिसांड्रो मार्टिनेज को नहीं ला सकते। अगर अगर मैंने देख लिया ना कि डैन बर्न लिसांड्रो मार्टिनेज डैन बर्न को मतलब वो कवर कर रहा है, इट्स गोइंग टू बी हिलेरियस। मेरे को आज वो भी तुम याद नहीं है, कर वो सकते। याद है वो लड़ाई हुई थी जिसके अंदर लाइक रोनाल्डो वाज किकिंग द बॉल अग्रेसिवली अगेंस्ट कर्टिस जोन्स हाँ लास्ट ईयर। हाँ उस टाइम क्या हुआ था, उसके बाद रॉबर्टसन आया रोनाल्डो के अगेंस्ट, फर्नांडिस और ये सारे आ गए। आई सॉ फ्रेड अगेंस्ट इबू कोनाटे, और कोनाटे हंस रहा है। वो देखा कौन है उसका, हंसने लग गया। मैं था भाई क्यों कर रहा है तू ये, मतलब कोनाटे वहां लंबा चौड़ा एकदम, तू फ्रेड है भाई। और फ्रेड वो भी घटिया वाला फ्रेड था उस टाइम, तो अच्छा वाला हाँ। फ्रेड भी नहीं था कि हाँ भाई ठीक है परफॉर्मेंस का वो रहे कॉन्फिडेंस। बट आई मीन दिस विल बी अ गुड गेम। आई सी दिस गेम गोइंग टू एक्स्ट्रा टाइम। मुझे ऐसा लग रहा है कि सेम। क्योंकि ये लोग इतना लो ब्लॉक खेलेंगे न्यूकासल, ये रैशफोर्ड को स्पेस नहीं देंगे, क्योंकि रैशफोर्ड के पास अगर स्पेस होती है लेफ्ट में तभी वो जाके दो स्कोर कर सेम पाता है। इसलिए आई थिंक व्हाट Araujo did in the Barcelona this match, Man United match na, if someone can study that match, if Eddie Howe can study that match, he can understand how you have to play against Rashford. And I mean Rashford in his prime. तो And अगर then Araujo is not a bad defender, and Araujo is हम्म, one of the top defenders, not only in the league but in the world. और उस बंदे ने रोक के रखा था इसको। तो what in my opinion what I want to see, and this is my dream, is just a dream, is it's nil nil, it's 90, it's additional time, last minute of additional time, corner to Newcastle, and Dan Burn scores the winning goal for Newcastle. That अरे is भाई यार, going to be poetic. It's going to be so beautiful. I would love it because Dan Burn is a और Geordie himself. So और 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 ट्रिपियर फ्री किक, Trippier free kick. Oh my because god. we know De Gea is not good with set pieces. Set pieces. I think that's the So only yeah, prayer Newcastle have. There's no other way Newcastle is going to win this game. मैं कल मीम रखूंगा. Today I feel Geordie. जियानी इन्फेंटिनो का. Today I feel Geordie. मैं उल्टा कभी नहीं बोल सकता। टुडे आई फील मैनक्यूनियन रेड, नो प्लीज। बट Okay, आई थिंक so या हाँ बोल क्या कह रहा था? मीन या आई थिंक इट विल बी अ रियली गुड गेम।
and I just hope Newcastle wins. Exactly. Yeah. Yeah, Okay, so this was our show for today. We're wrapping up for today, but we will come back if possible tomorrow. Divyansh, करना है एक yeah, show we can tomorrow. try. We can We can try. try. We can try. Okay, we'll try to do a show tomorrow if possible, क्योंकि both of us have What? full-time jobs and Oh, we're doing this on the uh, side. Okay, okay. so thanks, Divyansh. Chalo. Thank you. And if you do like the content, then do like, share, and subscribe. Yep, Again, please help support. मदद करो. support. I mean, Uh, I'm taking my words back. Support and not support like, us. share, and subscribe. Support us. Uh, anyway, thanks, Divyansh. Yeah. मिलते हैं. Thank you. All the best.